हाय। तो पिताजी का बर्थडे, तो ये आई डोंट नो क्या लिखा है, बट द अटेम्प्ट हियर इज दैट you go and hug your parents, you take their blessings, you ask them stories about your childhood at the end of it, um, and you just look at your parents from the eyes of an adult and not that of a child. So yeah, here goes. uh, to Papa with love. उनके जन्मदिन पर हमेशा एक टीस उठती थी कि वाइस पहले क्यों नहीं हुए। ये सब पहले क्यों नहीं समझ आया, क्यों उन्हें नहीं बताया कि ही वॉज माई फर्स्ट लव, द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट। हर लड़की अपने पिता से बेशुमार प्यार करती है। प्यार, एज यू नो, इज नॉट अ लीनियर पाथ एंड इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, फॉर श्योर। बटॉन, फ्रेंच फिलोसोफर, कहते हैं एज अ पेरेंट कि माई डियर चाइल्ड, आई एम सॉरी दैट आई एम द फर्स्ट ह्यूमन यू मेट। I'm not the best, just the first. By virtue of that, I will disproportionately influence your life, inner life. ये 40 में पता चला। Now let's go back to being 3. 3 साल का बच्चा या बच्ची सिर्फ physical touch और affection और play ढूंढ रहा होता है. Imagined is better than the real, and everyone is a playmate by default, especially your papa. He's a big and strong man. He can never do any wrong. You love that he rough plays with you. He has a garage and makes things with his hands. He's a builder, and you want to build planes too. Nothing less than that will suffice now in this lifetime. At 7, he can do mental maths in his head in Hindi. अब तुम्हें 100 on 100 तो लाने पड़ेंगे in arithmetic. Monkey see, monkey do. At 12, you can see Papa for who he is as a human. He's a mixed bag. You are in love with his flaws too. He's a scientist, lawyer, watchmaker, computer geek, and a car mechanic all in one. And boy, he likes his drinks and the song and dance that follows. As an adult, he's a layered man. There's a depth to him and also surface level fragility, and you don't just understand it yet. Intellect with insight is a great burden. Simple people have it easier. You know that now. The Sangwans were not raised to have an easy life for sure. I was not born into ease, learning, doing, making, and growing, yes, but not ease. Easy would have been dreams of picket fences at 18 and a couple of kids, maybe. But fathers underestimate the influence they have over their Bitya Rani. Mini Singh by 15 was ziddi, opinionated, and all-knowing for her own good. If you give a child access to all the books in the world, she'll wisen up beyond her years, and it's not organic. The head and the heart are not in sync at that age. And that's the life truths of a childhood filled with what children fear most, falling and loud voices, and you've created a hot, ambitious mess of a human by default. For this, I have gratitude today. Koila, pressure, Hira, and all that. The internal drive is priceless, despite all the trials and tribulations of life. पर आइसक्रीम खिलाने और ड्राइव पे जाने के लिए झगड़ा अच्छी बात नहीं है। प्यार ड्राइव नहीं है। दिल काफ़ी फ्रजाइल होता है बच्चों का, और पापा का दिल भी इफेक्ट हो रहा था जब फौज में उन्हें जय हिंद सिखा रहे थे एंड कंट्री बिफोर एनीथिंग एल्स। सॉफ्टनेस भी खो दी उन्होंने। इन ह्यूमननेस इज नीडेड टू ट्रेन टू किल, आई बिलीव। इंसान सेंसिटिव था, IQ जीनियस। दिल, दिमाग और ट्रेनिंग कॉन्फ्लिक्ट में थे कॉन्स्टेंटली। इंटेलिजेंट लोगों को फ्रीडम पसंद होती है। द टग ऑफ वॉर बिटवीन बीइंग अलोन एंड बीइंग अ फैमिली मैन वाज एविडेंट in the intense bouts of responsible parental behavior and the constant road trips to escape it all. और उस ढोंगा में दुनिया दिखा दी पापा ने। मुझे लगता था कि चांद, सूरज और आसमान belong to me. अभी भी लगता है। I never saw a penny as pocket money for the longest time, but the fights for comics and books, as in who will read what, first led to a lifelong appreciation for expansion of the mind. And when you travel without a plan at the drop of a hat to roads unknown, you find roots within yourself without the needs of roofs and things. Also, when you're meeting minimum 2 new people a day from different walks of life, then you look for that light and ask for their stories. Status and degrees fall off the wayside. वो ट्रेन में बाबाजी के साथ चिलम पिया था ना, वो मम्मी को नहीं बताया। A little secret. और हाँ, अब जब आपने नदी में फेंक दिया था, सिंक और स्विम यू सेड, ऑलमोस्ट सैंक, पर नहीं बताया मम्मी को। और जब झगड़े के बाद खाना न खाने की धमकी के साथ आप मुझे कहानी सुनाते थे, वो विक्की को भी नहीं बताया। कौन कितना बच्चों के साथ खुमानी तोड़ता है और डॉगी को ब्रांडी पिला देता है, बताओ।
our little secrets. Now let me tell you mine. When I had utterly disappointed you with not marrying and didn't know how to do anything for you, you would never guess what I did. ये तो किसी को नहीं पता. पापा सेंसिटिव तो थे ही, तो हार्ट अटैक हो चुका था. कड़वे थे तो डायबिटीज. और when the spirits took the kidney away, I had to save you. Maybe my kidney was a match, but I was too fat. So I remember fighting with God. Bariatric और running से weight loss तो चला गया. But too little too late. चले गए आप भी. I still had one kidney too many, a failed child once again. Divine fuckery अभी चालू थी by the certified dad नुमा trickster. मम्मी की चूड़ी कभी नहीं टूटी और वाइट कपड़े कभी नहीं पहने आज तक. कलरफुल है मेरी माँ. मस्त. मैं विक्की के साथ अंतिम स्थल भी गई. जाट परंपरा भी डांग. आप शांत नहीं होते वरना. और हाँ, Vicky is a brilliant father, Tanu is the glue, and Kabir thinks Dada belongs to him, despite never having met him, and maybe he did. मैंने फिर भी कुछ 10 साल आपसे गुस्सा निभाया. अटल रिश्ते की तरह. बाइंडिंग तो कंप्लीट थी. आप अभी भी दिख रहे थे सपने में, मम्मी को नहीं, मुझे. Every self-sabotage in dark night of the soul had you standing at the abyss. Looking at me with unblinking faith, almost a twinkle. Lessons from the beyond are real. Minnie गुम गई है, you said. पर नहीं, Minnie यही है. Standing tall in your essence and core strength. टॉस दी नहीं, लिटिल प्रिंसेस बुलाया नहीं, तो प्रिंस चार्मिंग कहाँ से आता? अब काउंटर पार्ट होगा, लाइफ पर्पस सफल होगा, साथ में. विरासत में एंडलेस बिलीफ और इमेजिनेशन दे दिया आपने. हाफ चॉइसेस, हाफ मेजर्स अब भी अनएक्सेप्टेबल है. I have an inner voice that speaks like you. A man of high morals and work ethic. A man of curiosity. Who was a provider beyond belief. Who ensured freedom for us all in our being. A little misunderstood perhaps. A man beyond his times. A man of reason. An emotional man. A man of humor. A righteous man. A studious man. A creative man. To everyone, he was Colonel Gunpal Singh. To me, Papa. With love. आपकी मिन्नी. हाँ, अब भी आप ही दुनिया हो. सर पर हाथ फेर कर जाओ एक बार और. खुश रहो हमेशा.